And if you have some additional work to do other than listening to the topics that I'm explaining, you can also get up and go. Do not force me to throw you out of the class. Now, as we were discussing, उस situation में अगर उस व्यक्ति को ये कहा जाए कि हम आपको कुछ ना कुछ help करके देंगे and you will get the profit. Now, sometimes what happens? Sometimes these people, these fraudulent people, they are the one responsible for claiming your losses. Now, what will happen? जब वो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है आपके लॉसेस के लिए, अगर वो आपको आके क्लेम कर देता है कि हम आपको हेल्प कर देंगे to get benefits, to get your profit back, to get your previous profit section or profit charts back, तो अब क्योंकि उसकी वजह से नुकसान हो रहा है तो उसे पता है कि कॉज क्या है. अब जब उसे कॉज पता है तो वो ट्रीटमेंट कर सकता है. Now once he has decided to do the treatment, it will show immediate effect. Now because of that immediate effect, that person who was once a logical, reasonable person, will he ever believe in logic? क्या आप उसे जबरदस्ती दोबारा लॉजिक की तरफ ले जा सकते हैं? नहीं. उसके दिमाग में यही चीज बैठ जाएगी कि इस व्यक्ति ने मेरी हेल्प की है, इसने कुछ पूजा पाठ किया है, कुछ बुक दिया है, इसकी वजह से मेरा प्रॉफिट हो रहा है. Now whatever that person will be telling till the end of the time, उसके लिए वही सही है. They will not think about the logical things, they will not explain all the things reasonably, but they will think if he has said or she has said something, they will do that without thinking of the consequences. बिना उस रिजल्ट को देखे जाने समझे वो काम करेंगे तो वो व्यक्ति उनको कहेगा. अंडरस्टूड? यही चीज, यही आपका प्रॉब्लम होता है जब आप मेटाफिजिक्स या फिलॉसफी को या मिस्टिसिज्म को इंक्लूड करते हैं रिलीजन के साथ. Because religion is a very strong force to drive your life. Religion एक बहुत ही strong force होता है आपकी लाइफ को ड्राइव करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए. अगर आपके पास religion नहीं है, इसका मतलब आपके पास faith नहीं है, आपके पास hope नहीं है, आपके पास कोई भी पॉजिटिविटी नहीं है. आपके दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ नेगेटिविटी चलती रहेगी बिकॉज आपके पास फेथ नहीं है. आप किसी से तो प्रे करते होगे ना कभी भी, राइट? कभी अगर कोई मान लीजिए पढ़ के नहीं आए, या मान लो आपका पेपर हो रहा है C++ का, पढ़ के चले गए हो N++, तो फिर किसको याद करोगे फिर? That means we still have faith. If we have done nothing, still He will be there to save us. ठीक है? आप कैसे संभालेगा वो जाने, हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम उसके भरोसे जाए, राइट? तो बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर आपका एक फेथ है, आपकी लाइफ में एक होप है कि अगर हमसे कोई गलती हो जा रही है या हमारे हाथ में किसी भी सिचुएशन को सुधारना नहीं है, तो उसके लिए गॉड रिस्पॉन्सिबल है उस सिचुएशन को सही करने. He will do something that will be beneficial. He will do something that will turn this negative into a positive, right? हमें इतना होप है हमारी लाइफ में, लेकिन जब रिलीजन को नेगेटिविटी से जोड़ दिया जाता है, लॉजिकल रीजनिंग हम भूल जाते हैं. ठीक है? फॉर एग्जांपल, इफ वी टेक द सेम सिचुएशन, इफ यू हैव नॉट रेड एनीथिंग रिलेटेड टू द चैप्टर दैट इज कमिंग इन द एग्जाम, हाउ विल गॉड हेल्प यू? क्या वो हेल्प कर सकते हैं आपकी? नहीं. अच्छा, मान लो कि आपने यहाँ पर टेस्ट हो रहा है, इंग्लिश का टेस्ट हो रहा है, ठीक है? आपको चैप्टर्स नहीं बताए गए हैं क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो हम इसी चैप्टर्स को जितने चैप्टर्स पढ़ाएं सब में से टेस्ट आएगा. अब नाउ देयर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स, लॉट ऑफ पोएम्स, लॉट ऑफ प्रोज दैट यू हैव टू रीड. समहाउ यू लेफ्ट द प्रोज एंड यू कंसंट्रेटेड ऑन द पोएट्री. ठीक है? आपने चैप्टर्स जो हैं, पोस्ट मास्टर, सेल्फिश जायंट, ऑल द अदर चैप्टर्स आपने इसे छोड़ दिया. आपने सिर्फ पोएट्रीज पढ़ के गए. आपने सोचा कि पोएट्रीज आर, देयर आर लॉट ऑफ पोएट्रीज, इफ वी स्टडी दैट पोर्शन वी कैन एटलीस्ट स्कोर एवरेज मार्क्स. ओके, नाउ द थिंग इज, फॉर एग्जांपल, इफ माय माइंड, व्हेन आई एम मेकिंग द क्वेश्चन पेपर, माय माइंड इज दैट poetry is a little bit difficult for the student to understand, they might not be able to answer. Let's put more questions on the prose because chapters are easily being read. चैप्टर सिर्फ आप पढ़ के आप आंसर कर सकते हो. अब ये मेरा मेंटालिटी बन गया, तो मैंने क्वेश्चंस आपको दे दिए 80% फ्रॉम दी चैप्टर्स दैट आर बीइंग रेड. तो क्या उसमें गॉड कुछ हेल्प कर सकता है? There will be only 20% of the question that you will be able to answer. Or if you remember any of the classes that I have taught or anything that you have read priorly without any revision, जो भी आपने इससे पहले पढ़ा
पढ़ा होगा, अगर कुछ भी याद होगा तो उतना ही लिख पाओगे. That means no chances will be there that you will score average marks also. ठीक है, एवरेज मार्क्स लाने का भी कोई चांस नहीं रह जाएगा आपके पास. अंडरस्टूड. नाउ इफ यू डू दैट, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पर हमें फेक तो है, लेकिन ये फेक क्या सही जगह लग रहा है? नहीं ना. दिस इज नॉट लॉजिकल रीजनिंग. नाउ फेक हम कहाँ सही जगह लगा सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, इफ somebody has been in an accident, ठीक है, मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, उस दौरान आपके हाथ में कुछ नहीं है, डॉक्टर्स के हाथ में है, तो आप क्या प्रे कर सकते हैं कि उन डॉक्टर्स की जो हेल्प कर रहे हैं, मेरे जो पर्सन यहाँ पर है, जो भी जिसका भी एक्सीडेंट हुआ है, एज अ फैमिली मेंबर यू कैन प्रे दैट द डॉक्टर्स कैन हेल्प द पेशेंट. ठीक है, यू कैन नॉट हेल्प द डॉक्टर टू सेव द लाइफ ऑफ अ पर्सन हु इज नॉट डेड. He is still alive or she is still alive. You cannot pray the God to not take their soul. You can pray that the doctors can be able to help. कोई ऐसा डॉक्टर हो जिससे ये पर्सन बचा पाए. अंडरस्टूड. इतना प्रे आप कर सकते हैं. दैट इज लॉजिकल. दैट प्रेइंग इज लॉजिकल. अगर कोई व्यक्ति मर गया है, ऑलरेडी ही इज बीन डेड और शी इज डेड, उस दौरान अगर आप प्रे करते हो कि वो वापस आ जाए, इज इट लॉजिकल? Not logical. He's already dead. She's already dead. You cannot bring back the life from a person, especially if you are not a doctor. Especially if you are not a doctor. Understood? तो जो चीज आपके हाथ में नहीं है, आप पहले प्रे करते हैं भगवान से, लेकिन वो लॉजिकल हो जरूरी नहीं होता. Right? We only have some hope that it might be helpful if we pray for the God. Only He can do something. But still, God cannot do something regarding something that has already been happened. जो हो चुका है उसके पीछे जाके तो वो हेल्प नहीं कर सकते ना. जैसे आपने क्वेश्चन जो है आ रहे हैं, उस चैप्टर को पढ़ा नहीं, तो वो ऐसा तो नहीं कि टाइम पलट देंगे और आप वापस जाके पढ़ पाओ उसको, या आपको एडिशनल कुछ अलग से क्वेश्चन दे दिया जाएगा. ऐसा तो नहीं हो सकता. Yeah, it is not possible. So keeping faith is very important, and keeping the faith in the right direction is also very important. अंडरस्टूड. और यही चीज जो है नेहरू जी कहते हैं कि यहाँ पर आपका फेथ जो है उस चीज को ही यूटिलाइज करके बहुत सारे लोग मेटाफिजिक्स या मिस्टिसिज्म को इंक्लूड कर देते हैं, एंड दे समहाउ टेक एडवांटेज ऑफ इट. अंडरस्टूड. यस, इफ यू वांट टू राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, गो अहेड एंड राइट डाउन. Okay, according to Nehru ji, according to Nehru ji, according to Nehru ji, according to Nehru ji, there is still nothing, according to Nehru ji, there is still nothing that he certainly believes in, that he certainly believes in the rigid lines, RIGID, rigid lines. According to Nehru ji, there is still nothing that he certainly believes in the rigid lines, RIGID, rigid lines of metaphysics, rigid lines of metaphysics, rigid lines of metaphysics and philosophy of the ancient ANCIENTS, ancient or modern era,
or modern era, ERA, era or modern era. Now what is, I'm repeating the point. According to Nehruji, there is still nothing that he certainly believes in the rigid lines of metaphysics and philosophy from the end of the ancients or the modern era. Now, according to this line, what he's trying to explain here is that there is nothing in the metaphysics or the philosophy that will make him certain, that will make him confident to believe in the rigidness. The rigidness means क्या होता है? Rigidness का मतलब होता है जो basically there is no bending in that. ठीक है, आप उससे bend नहीं कर सकते हो, जो इतना rigid है कि yes, बच्चे मास्क हटाते हैं, तो आई एम नॉट एबल टू हियर. रिजिड, अच्छा रिजिड स्टिक का मतलब होता है कि उसे आप अगर इस तरह तोड़ेंगे तो तुरंत से टूट जाता है. ठीक है, देयर इज नो फ्लेक्सिबिलिटी इन दैट पोर्शन. ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, आप उसे बेंड नहीं कर सकते हैं, मोड़ नहीं सकते हैं, टूट जाएगा वो तुरंत से. ठीक है, रिजिड का मतलब होता है कि वो बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं होगा. नाउ फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी का यहाँ मीनिंग ये कहा जा रहा है कि मेटाफिजिक्स या फिलोसॉफिकल जो कॉन्सेप्ट होता है उसे आप रिजिडली फॉलो नहीं कर सकते. रिजिडली का मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते. जैसा मैंने आपको ऑलरेडी लास्ट क्लास में बता रखा, अगर किसी ने एक अपनी लाइफ में फिलोसफी दी है, आप उसे रिजिडली अपनी लाइफ में फॉलो नहीं कर सकते हैं, बिकॉज योर लाइफ इज डिफरेंट देन देम. ठीक है, उनका एजेंडा अलग था, उनका लाइफ सिचुएशन अलग था, उनके डिमांड्स अलग थे, उनके गोल्स अलग थे, उनका एरा अलग था. आपका एरा अलग है, आपका टाइम अलग है, आपका सिचुएशन अलग है, आपकी डिमांड्स अलग है. ये सारी चीजें डिफरेंट है. नो टू पर्सन्स आर हैविंग द सेम थिंग्स, सेम सिचुएशन दैट दे आर गोइंग टू हैपन. नाउ यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, सबके सब बीसीए कर रहे हैं. There are also students from ATU branch who are doing BCA. Now, in total, we can take 300 students are doing BCA in one batch, 1 year. Okay, around 300 students who are doing BCA. Will all the 300 students will be selected in one company, one position, one salary? Is it possible? No, but you are taught the same concept, right? आप सभी को सेम कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है, आप सभी को सेम जो भी एक्स्ट्रा आपको एड ऑन किए जा रहे हैं, सभी को सेम एड ऑन्स पढ़ाए जा रहे हैं, सभी को सेम क्लासेस दी जा रही हैं, सभी को सेम टाइमिंग दी जा रही है, राइट और नॉट? द डिफरेंस इज व्हाट? योर माइंड, योर सिचुएशन, योर डिमांड्स, योर गोल्स, वो सारी चीजें डिफरेंट है, राइट? आप हो सकता है कि एक कंपनी में, जिस कंपनी में ये अप्लाई कर रहा है उस कंपनी में ये अप्लाई करेंगी ना, राइट? Maybe your goal is to go in Accenture, maybe your goal is to go in Capgemini, maybe your goal is to go in Wipro. अलग-अलग companies में आपका एक अपना goal है. Now, if you are going to follow the same path that your partner is going to follow, will you end up in the same path? Right. Because all the situations from each and every person that exist are different. आपको लगता होगा कि जो प्रॉब्लम मेरे फ्रेंड के साथ हो रही है वही प्रॉब्लम मेरे साथ होगी. Even having so many similarities, there is no guarantee that you and your friend will end up with the same situation in life. Understood? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपका फ्यूचर है ही नहीं. Future is just the reaction of your actions. Whatever actions you do in the present and in the past will form your future. You will be responsible for your future and nobody else. आप किसकी बात फॉलो कर रहे हैं, आप किसकी पढ़ाई कर रहे हैं, आप किस जगह से आए हैं, आप किस एनवायरनमेंट में ग्रो कर रहे हैं, doesn't matter. Only your action can form your future. If you are going to concentrate on your studies, if you are going to make your workings hard, if you are going to make all the concepts clear, maybe you will get your goal. But is it necessary that the same person you are living with, the hostel students you are living with, working same amount of time that you are working on the topics that you are studying, working same hours that he is studying,
basically writing the same concepts that you are understanding in the same way they understand, getting the level of coding that you have learned, the same level of coding they can learn. But whether your future will be predicted, it is not necessary. Understood? हार्डली आपका फ्यूचर जो है वो नियर फ्यूचर जिसे कहते हैं ना, एकदम नजदीकी फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जा सकता है. कैसे? फॉर एग्जांपल, the most future I can predict for you that you might be good in coding, but you will have to work very hard to be good in communication. ठीक है, इतना ही मैं प्रिडिक्ट कर सकती हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकती. हो सकता है in this 1 month there are a lot of students who will working hard, and in 1 month they will learn so much that nobody has thought to learn in 3 years. Right? It is possible कि इस 1 महीने में इतना लोग मेहनत कर लें कि वो 3 साल जो 3rd ईयर में है, 3 साल में जो मेहनत किए हैं उससे ज्यादा अच्छा हो जाए. Right? Your abilities and your capacities and your mindset is never the same with the other person you are even sitting with, you are living with. Understood? So your future is never even present, never even predicted. यही रीजन होता है कि जितने भी मिस्टिसिज्म या आपके कह सकते हैं साइकिक इवेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टैरो कार्ड रीडिंग, palm reading, all these will never guarantee you that your future is 100% secure. Why? Because future always change. No, future never change. Future is not even present. फ्यूचर है ही नहीं आपका. फ्यूचर कब बनेगा? जब आप जो काम कर रहे हैं उसका रिएक्शन होगा. अंडरस्टूड? Whatever work you are doing, whatever actions you are taking, whatever decision you are making, that will make your future basically. Understood? It is not only present. Future ऐसा नहीं कि एक रखा हुआ एक present है आपको बस खोलना है. नहीं. Future आपका build होता है. It is like a building that you are building yourself. ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसे आपको खुद बिल्ड करना है बेस से लेकर. अब आप उसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितने अच्छे प्रोडक्ट लेके आते हैं, ठीक है, या कितना आप उसमें डेडिकेशन दिखा रहे हैं, उस पे बेसिस होगा आपका बिल्डिंग कैसा बनेगा, आपका फ्यूचर कैसा बनेगा. इट इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट, एंड दिस इज व्हाट ही इज ट्राइंग टू टेल, दैट द फिलॉसफी दैट यू वांट टू फॉलो, यू कैन फॉलो. इट इज नॉट लाइक इट विल बैकफायर, इसका नुकसान नहीं होगा, लेकिन इसका बहुत ज्यादा फायदा हो इसकी भी कोई गारंटी. Understood? If you like something, if you like this philosophy that some person is following, you can follow it in your life. ऐसा नहीं कि कोई नुकसान होगा, लेकिन उसका उतना फायदा मिले जितना आपके फ्रेंड को हो रहा है, या जितना आपके टीचर्स को हो रहा है, या किसी और को भी हो रहा है. जरूरी नहीं है कि वो आपको भी उतना ही फायदेमंद रहेगा. Understood? All right. The next point that we are going to discuss, I'm only going to discuss it because we don't have enough time to write it down. Next, he is talking about karma theory. Okay, karma theory, you know, all of you know that whatever we do, we will get the result according to that. He places this, he explained the karma theory with the phrase cause and effect theory. उन्होंने karma theory को समझाने के लिए एक phrase यूज किया है, cause and effect theory. यानी कि जो cause है, जिस तरीके का cause है, उसी तरीके का इफेक्ट भी प्रेजेंट होगा. अंडरस्टूड? यस. Yes, Newton. It is like a Newton third law. Whatever actions you are taking, always it have an equal and opposite reaction. Now, if it is equal, if it is opposite or not, that we cannot get. Right? It might be not opposite, because if like you are working on a subject, like for example, you are working very hard on Python, it will not backfire. You know, इसका opposite reaction थोड़ी होगा, इसका तो अच्छा reaction होगा कि आप Python में बहुत अच्छे हो जाएंगे, right? तो opposite reaction है या equal reaction में ये नहीं पता आपको, लेकिन reaction always present. इतना याद रखो. जैसे हमारा karma theory में जब समझाया गया है हिंदू रिलीजन में, अगर एक पानी में आप पत्थर भी फेंकते हैं तो उसके रिपल्स प्रेजेंट होते हैं, वेव्स प्रेजेंट होते हैं, राइट? वो वेव्स जितने दूर जाते हैं किस पर डिपेंड करता है कि पानी की गहराई कितनी है, पत्थर कितना भारी है और कितने फोर्स से आपने फेंका है. यानी कि उसमें आपका भी फैक्टर इन्वॉल्व है, बॉन्ड का डेप्थ भी इन्वॉल्व है, स्टोन का हेवीनेस भी इन्वॉल्व है, लेकिन सबसे ज्यादा फैक्टर अगर मैटर करता है तो वो आपका फोर्स है कि आप कितने फोर्स से. अगर आपने छोटे से ही पत्थर को बहुत फोर्स से फेंका
important factor in that ripple or in that consequence is your own course. What course have you put forward in the actions that you are going to do will represent the effect. Sorry, I don't get you. But see, we are not talking about the actual course. We are talking about the force that you have to put, the effort that you have to put in doing something. ठीक है, मेरे समझाने का मतलब ये था कि आप जिस तरीके का जो एक्सेलरेशन लगाओगे वो एक्सेलरेशन आप लगाओगे या मोशन की वजह से होता है? बस आपने कैसे भी फेंक दिया एक्सेलरेशन लग जाएगा क्या? वो आप ही ना लगाओगे. So it depends on you. That's what I'm telling. कि जितना इफेक्ट आप डालेंगे, जितना मेहनत आप करेंगे, उतना ज्यादा आपको रिजल्ट मिलेगा. ठीक है, उतना ज्यादा बड़ा वेव आपको प्रेजेंट होगा. अगर आप सॉरी अच्छा, yes, if you want to study it like a science, I can teach you 5 hours in a day, but right now we don't have any time for that. So understand this. According to Nehruji, he says that we are taking the karma theory very granted. What do you mean by granted? According to Nehruji, he says that we are taking the karma theory granted. What do you mean by granted? Sorry? Granted, the meaning of granted is that you are not actually hearing how important it is. Understood? Granted का मतलब होता है कि आप ये नहीं समझ रहे हैं कि उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप बस उससे ये सोचते हैं कि ये तो बस प्रेजेंट है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कुछ प्रोविजन दिया जा रहा है, ठीक है, अभी आपको अगर एक नोटबुक खरीदनी है तो उसके लिए कितना एफर्ट लगता है? एक नोटबुक खरीदने में कितना एफर्ट लगता है? वो मनी एफर्ट नहीं, तुम्हें कितना एफर्ट लगता है? The most effort you will be putting is going to the market and actually buying it. उससे ज़्यादा effort लग रहा है क्या? नहीं. But if you have to actually earn for that one notebook, if you are going to get, how much effort will you have to put? That means you are taking granted for that one notebook that you buy. समझे? आप इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं अपने एजुकेशन की, आप इम्पोर्टेंस नहीं समझ रहे हैं जो प्रोविजंस आपको दिए जा रहे हैं. समझे? एसी में यहाँ पर बैठे हो, भूल जाते हो कि बाहर अभी भी वैसे लोग हैं जो इतनी धूप में बाहर काम कर रहे हैं ताकि उनके बच्चे पढ़ सके. Yes or no? You are taking granted those efforts that your parents are putting on so that you can come up here. Understood? Money value is only that much which you put in. मनी का उतना ही वैल्यू है जितना आप उसे देंगे, लेकिन एफर्ट का हमेशा वैल्यू रहता है, चाहे आप उसे ग्रांटेड ले चाहे आप उसे ना दें. समझे? Understood my effect? So we are going to talk about this